वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। हम बात कर रहे थे कनेक्टेडनेस की। हमने प्रीवियस लेक्चर में कनेक्टेडनेस क्या है और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि कनेक्टेडनेस कंटिन्यूस मैपिंग के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। दैट इज, अगर किसी मैट्रिक स्पेस में कनेक्टेडनेस की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो उस केस में कंटिन्यूस मैपिंग से क्या नए इफेक्ट आते हैं, ये सभी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बिफोर दैट वी रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ definitions that I am writing here, और उसी की हेल्प से we are going to build up the content of this particular lecture. Okay, so the first definition is about discrete two point space. Okay, discrete two point space. Okay, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारे कनेक्टेडनेस को डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई आई एम डिफाइनिंग इट। लेट एक्स नॉट इज डिफाइंड एज अ सेट, फाइनाइट सेट कंटेनिंग 0 and 1 ओनली। ओके, दो एलिमेंट है इसके अंदर। एंड लेट डी नॉट डिनोट द discrete metric on x naught. Okay, then the metric space x comma x naught comma d naught is called the discrete two point space. Okay, सो बेसिकली आप देखेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक को हमने हमेशा कैसे डिफाइन किया है। वी हैव दिस वन। ओके, डी ऑफ एक्स comma y is equals to 0 when x is equals to y and 1 when x is not equals to y. Now these x and y are coming from the space, and here a space is x naught that containing 0 and 1. So basically we have only these kind of choices, that is d naught of 0 comma 0 that is equals to d naught 1 comma 1, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 है इसलिए ये सेम है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो गई। ओके, एंड इफ यू सी d naught 0 comma 1 or d naught 1 comma 0, that is equals to 1 in case where x and y are not equal. Okay, so these are only four measurement of the matrices for the point of the space x naught. So this is about the discrete two point space. Okay, now with this discussion we are going to have a important theorem जो हमारे ये जो अभी हमने कंसेप्ट डिफाइन किया है डिस्क्रीट टू पॉइंट स्पेस, दैट बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द कंटिन्यूस मैपिंग एंड कनेक्टेडनेस. ओके, सो वी हैव द थ्योरम 4.1.6 and it says let x comma d be a metric space, then the following statements are equivalent. Okay, first statement is the metric space x comma d is disconnected, and the सेकेंड स्टेटमेंट, ये थ्योरम ऐसे भी हो सकता है क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो इफ एंड ओनली इफ केस है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर exist a continuous mapping
of x comma d onto the discrete 2-point space, that is x naught comma d naught. Okay, now we are going to have the proof of this. देखिए, जब हमें 2 स्टेटमेंट है या फिर ज़्यादा भी स्टेटमेंट है, जब हमें इक्विवेलेंसी की बात हो, इसका मतलब वो सभी स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है। सो वी आर गोइंग टू प्रूव कि अगर x, d डिस्कनेक्टेड है, तो उस केस में वी विल हैव अ कंटिन्यूअस मैपिंग व्हिच इज ऑन टू एंड डिफाइंड फ्रॉम दिस x to x naught. Okay, and if we for any metric space, if we have a continuous mapping which is on to from this metric space x to discrete 2-point space, then that space has to be disconnected. Okay, so this is a very strong result about the disconnectedness. So since we are dealing with the equivalency, so we will try to prove that first implies second first, and then next one we are going to prove that second implies first. Okay, so let x comma d is disconnected. Okay, अब जब हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी जहाँ पर x के डिस्कनेक्ट होने से वी हैव 3 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, क्या क्या थे? दैट वी हैव डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट, जिनके यूनियन में हम x को लिख सकते हैं। वी हैव नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट, जिनके यूनियन में हम x को लिख सकते हैं। या फिर x के पास ऐसा एक प्रॉपर नॉन एम्प्टी सेट है विच इज़ बोथ ओपन एंड बोथ ओपन एंड क्लोज। ओके, सो डिस्कनेक्ट कहते ही हमारे पास इस तरीके का डिस्कशन होगा। ठीक है, अब हमें इस एक ऐसी कंटिन्यूस मैपिंग को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम x टू x नॉट, राइट? सो ये डिस्कनेक्टेड है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आई एम राइटिंग दिस ओनली। ओके, सो लेट x be the union of A union B, where A and B are disjoint non-empty open subsets of x. Okay, so we can always suppose these kind of two non-empty disjoint open set that are forming this complete space in case where x is disconnected. Okay, then we can define, so we can define a mapping f from x to x naught by f of x is equals to 0 when x is coming from A and 1 when x is coming from B. Okay, so suppose हमारे पास ऐसा सा कुछ सिनेरियो रहा होगा कि ये हमारे पास x है और दिस इज दी सेपरेटिंग लाइन, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं A है, दिस इज आर सेट A, दिस इज आर B, दोनों ही अपने पास ओपन सेट है और इनका यूनियन करेंगे तो x बनेगा। हमने क्या कहा कि जितने एलिमेंट x के हैं वहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 0 आ रही हो और b के लिए 1 आ रही हो। आप इसका रिवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब x के एलिमेंट आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब b से कोई एलिमेंट आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। यू कैन डिफाइन दिस इन दिस वे ऑल्सो। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर, x कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों में कॉमन आ रहा हो? नो, क्योंकि ये दोनों ही डिस्जॉइंट सेट है। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं x में जिनके लिए 0 और 1 वैल्यू आ सकती है? ऐसा नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक फंक्शन है और एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं दे सकता है। इसका मतलब हमने जो ये फंक्शन डिफाइन किया है वो अलग अलग सेट के लिए, अलग अलग पॉइंट्स के लिए ये दोनों वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है,
बेसिकली इस एक्स नॉट के एलिमेंट जो 0 और 1 है उन्हीं के बिहाफ पे ही वी हैव डिसाइडेड दिस ए एंड दिस बी. नाउ लुक एट दिस मैपिंग. Is this function is continuous? See, this function is continuous on A, this function is continuous on B, A and B constructing this X, so you can say this function is continuous on this X as well. Okay, what about on 2? अब हमें x naught के लिए if you choose any element from the codomain, can we have a point from the domain? The answer is yes, because this x naught containing only 2 points. One is 0. For 0 we have a lot of point from the set A, and for 1 we have the points from B. तो 0 और 1 दोनों के केस में we have the premises जिनके लिए f of x की वैल्यू 0 या फिर रेस्पेक्टिवली 1 भी बन रही है. ठीक है, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड एज वेल एज दिस इज on to. Okay, so I think on to case is very much clear. We just need to prove the continuity of this function. Okay, अब कंटिन्यूटी को हमने कई तरीके से देखा है. वी कैन यूज़ द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वी कैन यूज़ द सीक्वेंस डेफिनेशन, वी कैन यूज़ द सेट बेस्ड डेफिनेशन, दैट इज़ कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज अगर ओपन सेट बन रहा है तब भी क्लोज कंटिन्यूस है. क्लोज्ड सेट की इनवर्स इमेज क्लोज सेट बन रहा है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है. नाउ हियर वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी विच आर ओपन. तो यहाँ पर हम वो वाला मेथड यूज़ कर लेंगे कि इस एफ की इनवर्स इमेज, अगर हम ए की इनवर्स इमेज की बात करें, हम बी की इनवर्स इमेज, सॉरी, हम एक्स नॉट के हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज की बात करें तो वो एक्स में ओपन ही होना चाहिए. अगर ऐसा है देन आर फंक्शन एफ विल बी कॉन्टिन्यूस. ओके, सो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ definition for the continuity. So let me proceed for the on to, and then we are coming to the continuity. Okay, likewise even you can feel the continuity from this the definition also. Now we are going to write the mathematical expression. Okay, then claim 1 that f is onto, right? So we can say for all y from x naught there exists x in x such that f of x is equals to y, that is for, अब x naught में तो है ही दो वैल्यू, so for y equals to 0 there exists some a in a such that f of a is equals to 0. हमने कहा है पूरे के पूरे a पर ये 0 है, and for y is equals to 1 there exists some b in b such that f of b is equals to 1. So you can say for the both of the values, or you can say for every value from the codomain we have the premises, right? Now अगर प्रीमिस है तो हमारा फंक्शन ऑन टू है. Thus f is on to. Now come to the second claim. Claim 2, f is continuous. Okay, and for the continuity we are going to use the definition through the open set, right? So we know that all the open sets in open subsets of x naught can be listed as, you can see x naught में क्या था 0 और 1, so we can have the phi as open set, then we have singleton set 0, singleton set containing 1, then we have 0 and 1, the space itself. तो ये चार ही अपने पास ओपन सेट हैं x naught के अंदर. ठीक है, now if you identify the f inverse, then f inverse of phi, that is equals to phi, which is open. Now f inverse of 0,
that is the complete set A, F inverse of 1 that is equals to B, and here you can see if you identify the F of 0 comma 1 then and F inverse of the complete space क्योंकि on टू है so you can write x, okay, and ये भी ओपन है x में, ये भी x में ओपन है, ये भी x में ओपन और ये भी x में ओपन है, which show that inverse image of every open subset of x naught is open in X. Thus, F is continuous. Mapping. Okay, so we have a continuous and onto mapping. Okay, hence we have a continuous onto mapping from x comma d to x naught comma d naught. Okay.